हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल सीए इनसाइड एंगल। और आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं डिस्कस ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ न्यू कोर्स इंट्रोड्यूस्ड बाय आईसीआई। एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। और आज हमारे पैनल में है AIR 1 सीए फाइनल के भ्रमर जैन, ऑल्सो AIR 8 सीए इंटर अक्षत गोयल, AIR 1 सीए इंटर एंड ऑल्सो ऑल इंडिया हाईएस्ट स्कोरर इन सीए इंटर, plus Shubham Malhotra, AIR 8 CA final and AIR 1 CA inter, and of course Divesh Harpalani, AIR 6 CA inter and AIR 30 CA final. और मैं हूँ CA यश चांडक, CA.CS and also CFA level 3 candidate. In this video आज हम चालू करते हैं फटाफट पूरा एक एक पॉइंट पे इंट्रोड्यूस करना। और एक और चीज मैं बता दूं आप लोगों को कि इस पैनल में सब के सब डाइवर्स आपको पैनल मिलेंगे, पैनलिस्ट। दैट इज मैं हूं नवंबर 20 पास आउट, भ्रमर जैन जनवरी 21 पास आउट, दिवेश हरपलानी जुलाई 21, शुभम दिसंबर 21 एंड ऑफ कोर्स अक्षत गोयल May 22। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम एंड स्टार्ट। ओवर टू यू दिवेश। Thanks a lot, Yash, for the wonderful introduction. Hello, everyone watching this video. The purpose of this video is to decode the new scheme of ICAI and to explain you what, in our understanding, is the rationale behind institute's thinking, and we'll try and analyze each of the change for you. So, I think starting with the high-level changes that you can see, which most of you already know, is the fact that intermediate, as against 8 papers earlier, there will be 6 papers now on, and as against 8 papers in CA final, there will be 6 papers in CA final now on. And instead of that, now there have been 4 sets of self-paced online modules that have been introduced, all of which we will see in detail in the coming discussion. So talking about the quick changes in the foundation level, first of all, so far as the subject of accounting is concerned, first of all, 4 papers in foundation remain 4 papers, except for business correspondence and business and commercial knowledge have been removed from foundation. Business correspondence ka ek special online course institute will introduce for all those who want to do. So it will not be mandatory, recommendatory रहेगा, जिनको भी अगर देखना है वो देख सकते हैं. As against that, other laws जो कि contract act, negotiable instruments, etc. जो inter में थे, they will now be moved to foundation. Also, apart from this, foundation में a big change that has been brought is पहले, as against the criteria that we all know, passing criteria 40% each subject and 50% aggregate, उसकी जगह अब कर दिया है institute ने 50% aggregate as well as subject wise 50% marks. So these are the big high level changes so far as foundation is concerned. तो आई थिंक इससे हम देख सकते हैं कि काफी डिफिकल्ट करने की कोशिश करी है इंस्टीट्यूट में थोड़ा फाउंडेशन को। जैसे काफी टाइम से लोगों की डिमांड थी कि थोड़ा एंट्री लेवल को डिफिकल्ट करा जाए, तो इस बार इंस्टीट्यूट ने फाउंडेशन को एक तो पासिंग मार्क्स 50% करके लेवल बढ़ाने की कोशिश करी है। प्लस जैसे कि दिवेश ने बताया, पेपर 1 अकाउंटिंग के अंदर इंटर का थोड़ा पोर्शन डाल दिया है, पेपर 2 के अंदर इंटर के लॉस का थोड़ा पोर्शन डाल दिया है, एंड पेपर 4 के अंदर भी इकोनॉमिक्स इंटरमीडिएट का पोर्शन भी इसके अंदर डाल दिया है। तो पेपर 1 to 4 में इंटर का सिग्निफिकेंट पोर्शन यहाँ पे आने से इंस्टीट्यूट का क्लियर इंटेंशन हमें दिखता है कि वो थोड़ा डिफिकल्ट करना चाहता है इंटरमीडिएट फाउंडेशन को। I think moving on to intermediate. So intermediate पहले 8 पेपर्स हुआ करते थे, अब 6 पेपर्स हैं। तो फर्क क्या चेंजेस लाए? तो पहले पेपर 1 पेपर 5 दोनों अकाउंटिंग की हुआ करते थे, तो अब इसमें से इंस्टीट्यूट ने कहा है कि पेपर 1 अकाउंटिंग में से थोड़ा पोर्शन फाउंडेशन में डाल देगा और बाकी बचे हुए पेपर 1 पेपर 5 को कंबाइन करके एक टोटल पेपर 1 बना देगा एडवांस्ड अकाउंटिंग का। तो हम समझ सकते हैं अगर एक पेपर 100 मतलब वेटेड का था सिलेबस का, तो नॉर्मली अब ये नया पेपर 150-160% ऑफ पुराना पेपर हम कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सिलेबस। I think another important point here was in the meeting which was held by BOS, they also said कि हो सकता है कि कुछ irrelevant topics in accounting and advanced accounting may be dropped as per the today's scenarios. So that is a good move as well. Secondly, पेपर 2 जो हमारा कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज था, तो अदर लॉज जैसे कि हमने फाउंडेशन में डाल दिए कॉन्ट्रैक्ट, नेगोशिएबल वगैरह, अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया, सिर्फ कॉर्पोरेट लॉज, दैट इज पूरा कंपनीज एक्ट। मतलब इंटर का जो अपन सेक्शन 1 to 148 करते थे वो भी, प्लस जो फाइनल में 149 से एंड तक था वो पूरा कंपनीज एक्ट इंस्टीट्यूट ने डाल दिया है कॉर्पोरेट लॉज में इंटरमीडिएट के अंदर सिंगल पेपर। तो इससे काफी सिलेबस इंक्रीज हम थोड़ा कह सकते हैं कि काफी सिग्निफिकेंट बढ़ जाएगा लॉज का।
there is a possibility कि वो corporate laws में SEBI and SEBI LODR भी डाल दें, like what used to happen in CA final. So I think वो भी कर सकते हैं institute. I think There's one no clarity important point here would be कि इंटर में I think we get introduced to law, मतलब नया नया law पढ़ना सीखना चालू करते हैं. How do we learn law? How do we draft section? What is the way of writing? And introducing whole Companies Act in the inter itself would be a little challenging for students, is what I feel. But that won't be the case ना. ये लोग foundation में थोड़ा बहुत तो law पढ़ के आएंगे. I think foundation में law like what it used to be in CPT हमारे टाइम पे पूरा MCQ based था. Now I think it's वैसा Still, other than MCQ. I think एक साथ वो इतना बड़ा act handle करना इंटर पे फिर भी difficult होगा. At least to remember the section number. CA final में वो section number याद करना task हो जाता है. You can't expect even in CA finals we didn't used to remember the beginning sections 1 to 149 तो नहीं करते थे. 149 के बाद से ही चालू करते थे. So quite challenging. Although इसमें जो rationale दिया है इंस्टीट्यूट ने वो है कि आर्टिकलशिप में हेल्प मिलेगी स्टूडेंट्स को पूरा कंपनी लॉ पढ़ने से. फिर हमारा पेपर 3 जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो सेम है. सच पेपर 4 टैक्सेशन सेम है. ऑडिटिंग में इन्होंने करना जो करा है, उन्होंने कोड ऑफ एथिक्स ऐड कर दिया है. अब कोड ऑफ एथिक्स कितना पोर्शन ऐड होगा वो तो आने वाले समय में पता लगेगा, पर कुछ पोर्शन डेफिनेटली इसमें भी ऐड करा है. अब जो अब इन्होंने EIS SM में से EIS को हटा दिया है. ऑल्दो वो कह रहे हैं उन्होंने हटा दिया है, पर उन्होंने एक डिस्क्लेमर नीचे दिया है कि हम इसको फाइनल लेवल पे दूसरे सब्जेक्ट्स में इंटीग्रेट कर सकते हैं. तो इंस्टीट्यूट से क्लियरली कह रहे हैं कि हम कोर्स तुम्हें कम नहीं करने वाले. तुम्हें लग रहा होगा पेपर कम हो गए, कोर्स कहीं भी कम नहीं करेंगे, पढ़ाएंगे तुम्हें सब कुछ. सिमिलरली पेपर जो हमारा पेपर 8 फाइनेंशियल मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स का फाइनेंस होता था, उसमें इकोनॉमिक्स फाउंडेशन में चली गई. तो अब जो ये पेपर 7 पेपर 8 के अंदर जो बचा हुआ पोर्शन है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसको कंबाइन करके उन्होंने पेपर 6 कर दिया. FM and SM का 50-50 marks. I think apart from this, few major changes so far as intermediate level is concerned. अब सारे के सारे papers में there will be MCQs versus पहले सिर्फ कुछ ही papers में होते थे. And not just objectives होंगे 30%. What is also important is negative marking भी introduce कर रहा है institute up to 25%, which I think is a bold move from the side of institute, but I think much warranted. Although ये इसमें कोई change नहीं है, papers closed book ही रहेंगे intermediate. इसमें open book कुछ भी audit भी नहीं कर रहे. नहीं कुछ पूरा क्लोज बुक है. अब थॉट ऑडिट में एसेस के लिए तो प्रोनाउंसमेंट दे देंगे. चलो, बट दे कैन एक्चुअली डू समथिंग दैट, मतलब दिस इज व्हाट आई फेल्ट व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सीए फाइनल्स के एसेस हम लोगों को इंटर में भी पढ़ाया जा रहे हैं और फाइनल में भी पढ़ाया जा रहा है. सर लाइक एक जगह पढ़ाओ ना, बिकॉज़ एज सच कुछ उसमें अमेंडमेंट आती नहीं, फालतू में 2 बार याद करना पड़ता है. तो आई डोंट नो, मतलब वो सीए इंटर से हटा नहीं सकते बिकॉज़ आर्टिकलशिप में अदरवाइज बहुत ज्यादा इशू रहेगा. एंड इन केस दे वांट टू लाइक उसको इंटर में रखना तो फिर फाइनल से हटा दो. I think the point here institute is trying to make is how important essays are for a chartered accountant. Sure. It cannot be compromised at all. The standards on auditing cannot be compromised in any situation. आप तो फिर audit pronouncement पूरी पढ़ के गए होगे, like word to word, considering how important they are, right? Yeah, definitely. तभी rank बनाई. Same to you. Okay, I think we'll move on to the next phase of a CA journeys, that is practical training. तो इस स्लाइड में अपन जैसे देख रहे हैं, इंस्टीट्यूट ने प्रपोज स्कीम में 3 साल से आर्टिकलशिप को 2 साल में कर दिया है, रिड्यूस टू 2 इयर्स. और लीव्स भी कैलकुलेशन चेंजेस है, जैसे कि पहले 1/7 होता था, अब दिया है एब्सोल्यूट नंबर में 12 लीव्स इन अ ईयर. तो यहाँ पे एक मेजर चेंज है, 3 ईयर से 2 ईयर. एंड दूसरी बात, एग्जिस्टिंग में था तुम्हारा या तो तुम इंटर का ग्रुप 1 या ग्रुप 2 पास करके भी आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हो. एंड अगर डायरेक्ट एंट्री वाले हो तो तुम 9 महीने की आर्टिकलशिप पहले भी कर सकते थे बिफोर एंटरिंग इनटू IPCC या और इंटर. बट अब प्रपोज स्कीम में इंटर के दोनों ग्रुप पास होने के बाद ही तुम लोग मतलब स्टार्ट कर सकते हो अपनी आर्टिकलशिप, जो कि एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है. बिकॉज this will actually reduce the number of students who are stuck in either group 1 or group 2, because what they used to do, एक ग्रुप में पास होने के बाद आर्टिकलशिप स्टार्ट कर दिया, एंड आर्टिकलशिप देन 1 मंथ लीव, देन वापस एग्जाम, फिर आर्टिकलशिप वापस फेल पास, और इसमें यहाँ पे स्टक हो जाते थे. तो अब ये एक बड़ा चेंजर हो सकता है कि दोनों ग्रुप पास होने के बाद ही आर्टिकलशिप स्टार्ट करना. 3 ईयर से 2 इयर्स में रिड्यूस कर दी गई आर्टिकलशिप, और नंबर ऑफ लीव्स एब्सोल्यूट टर्म्स में 12 लीव्स इन अ ईयर बता दिए. एंड एक्चुअली एक और चीज जो मेरे को लगी, दैट इंस्टीट्यूट इज मेकिंग श्योर कि every student gets the equal same amount of time for CA final preparation, because पहले क्या हो रहा था, जो स्टूडेंट वो इंटर का एक ग्रुप देके आर्टिकल से स्टार्ट कर रहा है, इवेंचुअली अपनी CA final preparations कम कर रहा है उसका टाइम पीरियड.
तो ये एक चेंज करें, एंड देन सेकेंडली जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, दैट नंबर ऑफ लीव्स व्हिच इज लाइक कॉमन ही रहेगी 6 months सबके लिए. So Plus this might one be like major rationale for institute to do this, 3 साल से आर्टिकलशिप 2 साल की है उसके पीछे, और आप दोनों ग्रुप इंटर के क्लियर करो उसके बाद इंटर दे सकते हो. मेजर रैशनल इज कि जो आर्टिकलशिप का पीरियड है, इंस्टीट्यूट वांट्स टू कीप इट विदाउट एग्जाम्स, ताकि आप फुल्ली आर्टिकलशिप पे फोकस कर Actually. सको. seamless articleship training. When you are entering into the articleship, you go into with all your knowledge that you give Yes. that you get in the IPCC. बोल देते हैं जैसे कहीं भी हम लोग इंटरव्यूज देते हैं या फिर जॉब में, दैट वी हैव वर्कड 3 years at XYZ कंपनी. इवेंचुअली हम लोगों ने काम वहां पे 2 साल ही करा होता है, तो वो नहीं कर पाएंगे अब आने वाले स्टूडेंट्स. Yeah, fair point. है ना? The work access substantially reduced. बहुत Maybe institute wanted to reduce that, but let's see. possible. बट अब ये है कि एग्जाम की छुट्टियां सबके ऑलमोस्ट बराबर रहेंगी और एग्जाम्स के हाँ. बाद ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा. हाँ, तो Yeah, इट कैन लाइक which गिव is a स्टूडेंट्स big- टाइम टू रिसर्च एंड क्या करना उन लोगों को. Anyways, I जो हम think लोगों exams के बाद का office time जो था, that was usually chill time. हाँ. Being But I playing think that senior differs, and right? delegating every work to your juniors. But that also differs, right, from firm to firm. किसी का पीरियड काफी चिल रहता है वर्सेस समवन जो एग्जाम के बाद भी, इवन सीए बनने के बाद भी काफी लोग एज एन आर्टिकल ही वर्क करते हैं फॉर द नेक्स्ट 1 or 2 months. So it becomes very difficult, and like Akshat mentioned, ये शायद इंस्टीट्यूट को इक्वालिटी करनी है, which is why they have brought this model. But I think all in all, this is a very positive step, is what I feel. Agree. Much needed change. But I think only having this sort of amendment in articleship is not enough. I think anybody who has done chartered accountancy course must have heard the word bonded labor, or what my dear friend Shubham calls it, bandhua mazdoor. So I think no changes has been suggested as far as those provisions are concerned. Still, you can't take transfer after 1 year. You can only take in case of rarest of circumstances, or in case you decide to opt for industrial training. But I think there's no logic to that provision. Matlab, how do you restrict a person from moving to a different firm? Why do you restrict a person to moving from another person? If he thinks that his learning is saturated in a firm, I don't understand what is the rationale of not allowing him to move to another firm in the next year. Agreed. Why has he an obligation to a CA who has worked for 1 year? Agreed. Agreed. I think one suggestion for the institute could be to revisit this provision, and maybe if they could make it free transferable thing. I think maybe the number of transfers is something instead of this provision, number of transfers, shayad the institute may want to restrict it to, let's say, 2 or 3, and uske beyond aap exceptional circumstances wala clause laga do. But ye jo time period hai 1 year wala, I don't think But that still, makes what much is the logic of restricting the number of transfers? Then to fir to CA बनने के बाद भी you should not be allowed to change 2 years in a two job in a years. नोटिस पीरियड डाल दो ना 3 महीने. Right, that makes sense. Why not Yeah, make that it makes similar sense. to That a makes typical industry? Why not bring a simulation of a real life in articleship? Agreed. ऐसा कोई सीन IIT IIMs में होता है क्या? इंटर्नशिप वो लोग कर रहे हैं, 6 महीने की कर दिए, लोग तो तो बहुत बीच में छोड़ना छोटी है होती तो है. हाँ, that's another point. लेकिन ऐसा भी होता है क्या? नहीं, 2 महीने प्रॉमिस कर दिए तो you can't move, you can't resign. वहाँ पैसे अच्छे देते हैं, कौन छोड़ के जाएगा. That's a fair point. I think institute का intention would be कि chaos ना हो again and again. Maybe people like institute thinks कि उस level पे शायद लोग immature होते हैं. First 3 months या first 6 months में someone wants to take a transfer. Then again वो रहेगा कि frequently How someone can you say changes the their date person will become immature after 1 year? Immature तो शुरुआत में होंगे ना यार, first year of articleship में. तब तो freely allow कर रहे हो transfer, and then सही 1 बात. साल बाद बोल रहे हो कि immature I हो गया. agree, definitely agree. Which is why I mentioned कि शायद number of transfer could be restricted, but Yeah, I again think that could be with a that is a notice good period वाला suggestion. point. Yeah, restrict the number of transfers or have some concept of notice period. Notice period. But I think Like leave it to CA and CA firm. our suggestion Yeah, would open be field कर दो. maybe you could bring in a notice period concept and like remove the 1 year requirement. yeah, I think having said that, let's move to the next slide. So in this slide, the duration of the course, as the ICAI is stating, will be reduced by 6 months. जैसे कि अपन देख रहे फाउंडेशन अभी भी 4 months ही दिया है इन्होंने टाइमलाइन, एंड स्टडी फॉर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 8 months एग्जैक्टली. आर्टिकलशिप जो 2 साल पे रिड्यूस हो चुकी है 3 साल से, तो उसके कारण स्टडी फॉर फाइनल एग्जामिनेशन एक्स्ट्रा मिल रहा है. यहाँ पे इंस्टीट्यूट बोल रही है 6 महीने का तुमको, और 6 महीने का स्टिल एक पीरियड तुम्हारा बच रहा है, ऐसा इंस्टीट्यूट बोलना चाह रही है. बट कैलकुलेशन वाइज अगर अपन करने जाते हैं, अगर देखे जाए, तुम अगर कैलकुलेट करोगे मई 22 से, तो तुम्हारा फाइनल का टाइम अभी भी न्यू कोर्स
मतलब न्यू स्कीम में भी May 25 पे ही आएगा, बिकॉज लेट्स कैलकुलेट May 22 अगर पास आउट होता हूँ मैं जुलाई में, इफ आई स्टार्ट आर्टिकलशिप बाय अगस्त सितंबर, देन आई विल कंप्लीट माय आर्टिकलशिप बाय September 24, probably 24 September October, and then how many months before you can get before registering for the November 24 examination, November 2024, you won't be getting 6 months before the completion of the articleship. तो तुम लोग को तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक इशू ये भी हो रहा है कि 6 महीने से ज्यादा प्रिपरेशन तुमको मिल सकती है अगर टाइम से स्टार्ट कर दिया अगस्त सितंबर अक्टूबर में आर्टिकलशिप, तो प्रोबेबली 6 महीने से ज्यादा 2 मंथ्स 8 मंथ्स एक्स्ट्रा, 2 मंथ्स एक्स्ट्रा 8 मंथ्स भी मिल सकता है, बट आई डोंट थिंक एनी टाइम बिफोर May 25 यू कैन गिव द फाइनल एग्जामिनेशन. सो ये एक पॉइंट इंस्टीट्यूट की तरफ से क्लैरिफिकेशन बहुत मेरे ख्याल से रिक्वायर्ड है कि हाउ दिस इज रिड्यूसिंग द कोर्स ड्यूरेशन बाय 6 मंथ्स. आई एम नॉट गेटिंग एबल. प्रोबेबली हो सकता है कि न्यू जो उन्होंने एनविसाज किया कि 2 की जगह 3 अटेम्प्ट ले ले, हर पर एनम 3 अटेम्प्ट ले ले, वो हो सकता है कि उस जगह पे वहां पे सिलेबस रिड्यूस हो जाए, कोर्स ड्यूरेशन रिड्यूस हो जाए बाय फ्यू मंथ्स, बट एज पर करंट सिनेरियो जो 2 अटेम्प्ट हो रहे हैं May and November, आई डोंट सी हाउ इट इज गेटिंग reduced by 6 months. Yeah, I think one possible step which institute could do right now is maybe change the cycle of examinations, right? But it is not fixed that institute has to take exam on May or November. So let's say according to our calculation, whatever the month comes, that is, let's say February. So I think institute can now start taking exams on March and after 6 months after March. So that way, the problem with that is, if you take exams in March, not everyone can start the articleship in August, na. September से ले लो, लास्ट डेट से ले लो ना. लास्ट डेट अक्टूबर होती है, अभी होती है अक्टूबर का. तो जस्ट have 6 मंथ जोड़ोगे तो मई में एग्जाम्स बैठेंगे. क्यों इतना कॉम्प्लिकेट करना है? मतलब सिंपल है. पहले होता था आपकी आर्टिकलशिप के 2.5 साल खत्म होने के बाद पेपर देना है. अब है कि आपकी आर्टिकलशिप 2 साल की होगी, फिर 6 महीने खत्म करने के बाद पेपर देना है. तो इन एंड बराबर ही आपको 2.5 years बाद पेपर लगेगा, और वो इन इफेक्ट 3 years हो जाते हैं इंटर एग्जाम से, क्योंकि अपना रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लग जाता है. करेक्ट. तो इन इफेक्ट इधर एक चीज बोलूंगा दैट लाइक यश मेंशन कि आप आर्टिकलशिप के लिए जल्दी रजिस्टर कर लो, सो यू विल गेट मोर स्टडी लीव्स. बट इधर एक वेरी बिग डिस्क्लेमर, भ्रमर ने भी एक्सटेंशन, इनके भी एग्जाम एक्सटेंड हुए थे, दिवेश के भी हुए थे, मेरी भी एक्सटेंड हुए थे. नहीं चाहिए होती सर ज्यादा लीव, 6 महीने आर एनफ. उसके बाद इरिटेटिंग ही हो जाता है. सो प्लीज डोंट फॉल इनटू द मिथ कि नहीं मैं जल्दी आर्टिकलशिप के लिए रजिस्टर कर लेता हूं, मेरे को अच्छी फॉर्म नहीं मिली, छोटी मोटी भी मिली, मैं बस रजिस्टर कर लो. आपको 6 months ऑफ एग्जाम लीव आर वेरी गुड इनफ प्रोवाइडेड यू स्टडी कंसिस्टेंटली इन आवर आर्टिकल्स. I think that is a very important point what Shubham highlighted. Matlab, right now the new student should not at all focus or have a mindset like this कि जल्दी articleship कर लो, ज़्यादा leaves मिलेगी, because take my word for it, 6 months are more than enough to get all in a rank 1 enough. Even if you have not studied for whole duration of your articleship, I believe if you study consistently and wholeheartedly in those 6 months, surely you can land up a good rank. So I think an articleship is obviously, as we know, is a very, very, very important part of CA course. It is the USP of CA course, as many say. So please make sure that you have a very detailed investigation of what options you have while you are pursuing articleship and land up in a very good firm. Do not make a hasty decision. But I think in summary, what it seems to us right now is कि CA course छोटा नहीं हुआ है versus like what many others are claiming it to be. Obviously, one positive change over here is कि सबको study leave एक बराबर मिलेगी, और rather let me put it the other way, सबको at least 6 months of study leave मिलेगी, which like Bhramar said is more than sufficient to even get an all India rank 1. So that is, I think, a very positive direction, in a positive direction. But हाँ, ये चीज है कि कोर्स का tenure कम नहीं हुआ है unless एग्जाम साइकिल चेंज हो गया. इन दैट केस ऑब्वियसली मे बी अ कपल ऑफ मंथ्स और मोर का फर्क पड़ सकता है, व्हिच इज आई थिंक आल्सो द फैक्ट दैट इंस्टीट्यूट हैज मेंशन्ड इन द डिस्क्लेमर बिलो दिस चेन. One more thing is कि अब इंस्टीट्यूट ने जो एग्जाम छुट्टियों के नेगोशिएशन जो ऑफिस से करते हैं, वो पूरे उसका पूरा स्कोप ही खत्म कर दिया है. यार फन होता था वो. अब ना मतलब कुछ जो डिफरेंट अपने को लड़ना पड़ रहा है 6 महीने 5 महीने 7 महीने, उसका कोई भी नहीं है, क्योंकि आपका आर्टिकलशिप खत्म हो जाएगी उससे पहले. आपका इंटर के एग्जाम्स का अगर कोई ना एक ग्रुप किसी का बच रहा है तो वो नेगोशिएशन खत्म, क्योंकि अब वो ग्रुप के बाद ही आर्टिकलशिप चालू होगी. आपके एमसीएस आईटीटी की छुट्टी कब लेनी है तो उसका नेगोशिएशन भी खत्म, क्योंकि अब इंस्टीट्यूट कहता है कि एमसीएस आईटीटी आप आर्टिकलशिप खत्म करने के बाद कर सकते हो, बट आई फाइनल एग्जाम से पहले. But I really hope तो पूरा एग्जामिनेशन फ्री, ऑलमोस्ट छुट्टी फ्री पीरियड बना दिया इंस्टीट्यूट ने आर्टिकलशिप को. सिर्फ 12 डे. आई थिंक ना कि इंस्टीट्यूट ये चाह ही रही है कि तुम आर्टिकलशिप के साथ अपना सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल, इंस्टीट्यूट के साथ जो ओटीसी एमसीएस और बाकी जो कोर्सेज है और सब अपना आर्टिकलशिप के साथ कंप्लीट करो, एंड देन प्रोबेबली स्टार्ट विद योर सीए फाइनल स्टडीज. But that's what I really hope. मतलब I really hope that CA firms don't start using this scheme as an excuse
we won't allow you doing classes during the period of articleship. Yeah, Yes. And when I say 6 months of study, that is enough for 6 months of self-study. The ideal Correct. situation is that you're done with all the classes, maybe you Correct. self classes or from any faculty or the institute's faculty, but you're done with the classes during the articleship period. So I really hope that CA firms don't start using this 6 months period as QC time. आइडिया मत दो यार उनको, बट आइडिया ना मत दो ना उनको। अब वैसे I'm भी अपना sure our ऑनलाइन audience is क्लासेस होती हैं, students, सब These कभी are भी ले very सकते CA हो, firms. वो कोई ऐसे परमिशन की जरूरत पड़ेगी नहीं, ऑनलाइन क्लासेस देखो फिक्स टाइम है नहीं कभी भी लो, तो आई डोंट थिंक उसका इशू होना चाहिए। नहीं फिर भी some they expect us to work 12 hours someday. They'll say कि क्यों ले classes मत लो. Yeah, I think we should quickly move on to the next topic in the interest of time. Correct. So coming on to next is self-paced online modules. I think this many of you must be hearing this word for the first time. So this is a brand new concept introduced by the institute in the very new scheme which we are going through. So final May, as you know, we had two subjects, that is corporate law, that is paper 4, corporate and economic laws, and paper 5, SCMP, the most studied subject of all. So kind of a relief now that these two subjects have now been converted into self-paced online modules. So no longer you have to give these exams in the final set of examination you will be giving in May or November. What is self-paced online modules? So self-paced online modules are basically ये सारे subjects के there will be pre-recorded lectures in the BOS app of the institute. I guess right now all of you must be having the BOS app in your mobile devices. So usme you will be given very bad Akshat. गलत है। Wrong example for students. वो फोन नहीं चलाता यार, वो नोकिया वाला चलाता है। नहीं, ऐसा इंस्टीट्यूट के मटेरियल से काम चला लेता हूँ, ऐप नहीं। I think that app is very useful and helps you keep you updated with all the events that institute is organizing. Basically, hoga ye ki there will be pre-recorded lectures on the institute's portal. You can study the chapters, the topics according to your own pace and give an online exam. So on this exam will be completely online and 100% MCQ based. तो ये एग्जाम जस्ट लाइक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पीटी टेस्ट के तुम जो एग्जाम्स देते हो ऑनलाइन अपने खुद के लैपटॉप में बैठ के यू विल बी गिविंग ऑनलाइन एग्जाम्स व्हिच विल बी proctored. I think you understand what I mean by proctored. Proctor means the whole screen of yours will be recorded while you are giving the examination, and if you are peeping on others mobile or others text or on your own textbook, you will be probably disqualified and disjudged or Correct. GPM whatever. So this is how will it flow. So online learning and online examination at your own pace, and you can give this examination anytime between after registering for articleship and before final examination. Mind you, before final examination. So you can't appear for final examination unless and otherwise you have completed the exams of all the 4 online self-paced module exams. So let's quickly deep dive here. What are the subjects here? So as I did tell you, set A is economic laws, जो final से आया, and set B is cost, जो भी final से आया. उसके अलावा 2 new electives are being introduced. So as you can see here, set C and set D. So इसमें there are variety of subjects which you can choose from. So in जैसे set C जो है specialization elective, you can choose any one of these subjects which you want to study or as an expertise. And another brilliant move by ICAI is introducing some diverse subjects or out of the topic series or really good subjects in set D. As you can see here, we have Constitution of India, which is in line with the National Education Policy of India. I think this is something which every Indian citizen should know about, the Constitution of India. And being CA, having a grasp of law, interpretation of law, that becomes very important for us. Just having learned those sections of Article 346A, GST kahan se aaya, list 1, list 2 is not enough. I think we should have the bare minimum knowledge of Constitution, psychology, which may interest many, entrepreneurship, right on the point, and philosophy. And another point I would like to point out here is this set of topics are just recommendatory. Matlab institute itself has said that it is not final. So here is where you all come in. So keep your suggestions coming in. Matlab flood the institute with your suggestions. So इधर बहुत सारे subjects might change. Even ICAI BOS stated in its webinar that economic law में जो तुम्हें जो topic दिख रहे हैं ना 1 to 8, it might not be necessary कि तुम्हें ये 8 topic हो. It might be possible कि 8 नहीं और पूरे 18 law हो और भी नए law हो. And it might also be possible कि ये पूरे 8 ना हो. They might give you an option कि ये 8 में से बस कोई 4 choose करो. So here institute is open-minded, and so let your suggestions and comments flow through in and help institute shape this online self-paced module in the best way. I think this is a very good step by institute, and actually the vision of the institute as stated by the president and vice president was
कि in future 15-20 years down the line, every examination is going to be online. Online in the sense, mode of delivery also online, mode of examination also online. So you'll be learning online, giving exams online. And I think this is the first step of the institute towards this holistic online based coaching and learning Correct. and examination. Rightly mentioned, Bhramar, like online institute भी online हो रहा है. हमारे institute के भी आगे लग जाएगा EICI, something like that. So I have just two concerns here with the self-based module. Why the idea is very good, and as you like mentioned, कि students I don't know कितना seriously लेंगे इन modules को. Like we all have given our advanced IDT exams और कितना ही पढ़ के जाते थे सुबह सुबह जाके बस book जल्दी से Well, पढ़ी. no, so the point here is that for you have to pass this examinations. Exactly. So you have we to secure passed. minimum 50, We passed minimum advanced IDT exam. 50% That's what I'm saying. minimum 50% exam marks plus, but the downside is this marks won't be included in the Won't be final included, man. evaluation. So it It's would. upside. So one Is a student downside, should, man. But the students won't take this seriously. actually they should take this Upside seriously. from the point of view of ऐसे मजा students. नहीं आएगा. And secondly, as Bhramar mentioned, like cheating का scope है इसमें. Institute have to like come up with like more robust ways ताकि cheating ना हो, लोग phone use ना करें and whatever. Like मैं नहीं बता रहा, तुम लोगों को पता होता है यार कैसे cheating करते हैं. I think Shubham has a lot of experience right here in this field. Please I share think your that- knowledge. pre-test में. मेरा I think that's where the institute. मैं पढ़ के ही आता है. Oh. I think that's where the institute wants to bring the practicality of ethics and imbibe them into Actually. the students, Correct. not to cheat. I think I think stringent center-based online penal exam provision would be should be more there. feasible. हाँ, center based online. Center-based- Yeah, I think Center तो based इसमें online phone का usage examination, नहीं of होगा. course. But फिर उसके लिए छुट्टी मिलेगी. संडे को करा संडे को एग्जाम होगा भाई. Sunday, हर संडे को एग्जाम जब दिन हो तब दो. एडवांस आईटीडी हर संडे को. but I really think yeah, मतलब that online proctored examination are ना मतलब वो सब cheat करते हैं यार. It is too easy to cheat on these examinations. मतलब तुम मोबाइल नीचे रख लो, किसी को पता नहीं चलता. तो I मोबाइल think the स्क्रीन के best सामने रख दो. Bhramar को भी I think- experience है लग रहा है. the best thing would be I think institute can adopt an hybrid means of taking examination, right? Like what right now is happening in CFA, that you go to a center and give online Yeah. examination, Correct. राइट. right? That would be हमारा best. PT test भी कई बार ऐसे ही होता था, आजकल online पूरा हो गया है, लेकिन that is तभी best. grade उसमें है cheating यार. वेटिंग भी नहीं हो पाती. Like I just want to mention कि सेंट्रल ऑनलाइन जो सेंटर बेस्ड टेस्ट होते हैं ना, वहाँ पे भी अगर स्टूडेंट चाहे तो ऑफ कोर्स चीटिंग करना चाहे तो करता ही है. अरे बट सीएफए का मैं Scope बता कम रहा हो हूँ, जाएगा. सीएफए का मैं बता रहा हूँ क्या होता है मैकेनिज्म. आप जाओगे, एंटर करोगे, आपका कैलकुलेटर, चश्मा, रुमाल, जेब, मोजा, एक से एक चीज कुछ भी नहीं छूटेगी जो चेक ना हो. प्लस आजू बाजू 2 सीसीटीवी कैमरा आपके ऊपर पूरे टाइम रहेंगे और एग्जाम के बाद प्रॉपर पूरा मॉनिटर होता है. एक एक इतना stake- इधर से इतना इधर. या stake- इंस्टीट्यूट हमारे पे exam भरोसा में, करता है. कितनी मेहनत इंस्टीट्यूट करे. हमारे, हाँ एग्जैक्टली, इंस्टीट्यूट हमारे पे भरोसा करता है कि बच्चे उन्होंने अच्छे पढ़ाए हैं. इसीलिए इन्होंने अभी एथिक्स तो इंटर इंटर में में इंट्रोड्यूस ethics है. कर दिया, करेक्ट. ताकि ये सारी That's चीजों what के I was- पहले आप एथिक्स पढ़ के आ रहे हो. And we should like request students कि ऐसे नहीं करते. एथिक्स की जगह ये सब इंटर में गलत स्टूडेंट है. वाले एथिक्स, फाइनल मेंबर वाले एथिक्स. हाँ, गुड आइडिया. हमारे लिए भी नया कोड ऑफ एथिक्स आएगा. रेगुलेशन शेड्यूल 1, शेड्यूल 2. Yeah, I think, but anyways, the object of the institute is to be light here. This is what I feel, because they are kind of indicating that why to study all the subjects in detail when you don't want to practice in them or specialize in them. So, जो पसंद आ रहा है पढ़ लो, but have an overall view of what the laws are, and if you want to deep dive further, do post qualification course. So the subjects or the topics that you see here, FEMA, RERA, IPC वगैरह, तो ये सबके risk management be it, ये सबके institute के पास advanced certification course है, which you can opt for after qualifying as a chartered accountancy. So if these subjects really interest you, you can maybe take up them more seriously at that point of time. आई थिंक इसमें थोड़े मैनेजमेंट सॉर्ट ऑफ पेपर्स भी थोड़े और डाल सकते हैं, थोड़े जो एमबीए सॉर्ट ऑफ होते हैं, मार्केटिंग. That will be covered in And both multidisciplinary, I guess. पे सेट डी है. आई थिंक सेट डी में थोड़े सब्जेक्ट नहीं, मल्टीडिसिप्लिनरी जो पेपर 6 है. This थोड़ा जो Next मैनेजमेंट phase के तो मैनेजमेंट थ्योरीज होती हैं जो अपन ज्यादा नहीं पढ़ते, ऐसे में ब्रीफ नहीं पढ़ते हैं, या फिर मार्केटिंग हो गई. करेक्ट. उस I टाइम think that is a can very be done. valid point made by Akshat. I think मतलब right when I studied for chartered accountancy, there was no subject where we deep dive into specific case studies of companies. मतलब extract होते थे, छोटे मोटे point होते थे, लेकिन it never happened कि अपन ने पूरा एक proper case study पढ़ा, पूरा how over the years a company transformed and what was the reason,
And मतलब so and these are something which is very important while we go for interviews. तो तुम कोई भी high level job interview में जाओगे तो they give you case study. Finance के भी case study देंगे, management के भी case study देंगे, तो you get case studies. And never in our course have we studied case studies. Strategic cost management में पेपर 6 है integrated business solutions. Yeah, I think but इससे डील करना चाहिए. I hope so कि they deal with topics such as management वगैरह as well. I don't think we're multidisciplinary more inclined towards management. It would be more of finance or what we have studied, right? Tax, law, accounts. वो अपन जो subject पढ़े हुए हैं वो सबका multidisciplinary होगा. I'm asking कि more of a management POV or a business POV वो angle डालो, because CA को when you go to practice, when you go out in the field, they don't expect that CA is a person who knows only law. They expect that CA knows in and out of the business model. और वो seriously हमें कभी experience होता नहीं है. That is only we experience in articleship या फिर practical खुद से करना पड़ता है. So some sort of structured learning can be introduced in CA course of that sort. It would make the course more rich. This is what I feel. So I think elective में तो at least you can introduce. Obviously you can't introduce it as a core subject. लेकिन elective में मतलब I think they can introduce it in sect C maybe specialization elective, right? D I think इसके लिए suitable है. D में काफी डल सकता है. Yeah, I think D, C, whatever works. But I think we should have a subject like that. And if you feel the same, I request you to please put it on the comments of the institute's link. I think that this would be a very important thing if it comes into force. Correct. Yeah. I think we'll quickly move on to the finals level and become a chartered accountant now. Yeah, I think I'll quickly take you all through what are the changes. As Bhramar mentioned earlier, paper 4 and paper 5, that is law and SCMP respectively, have now been removed from the CA final and now placed as two separate sets of the self-paced study module, that is the online one. Apart from that, direct tax, indirect tax remain the same. Financial reporting remains the same. I am expecting there being some tweaks so far as auditing syllabus is concerned, given the fact that code of ethics will now be introduced in intermediate, and strategic financial management, that is SFM, उसका नाम change करके advanced financial management कर दिया है, and यहाँ पे course में थोड़े बहुत changes रहेंगे. One important thing to note is that Akshat also said earlier कि जो EIS interface से निकाल दिया था, उसकी जगह अब final के papers में subject by subject जहाँ पे भी relevant होगा, they will put relevant chapters of EIS into such subjects, and ethics as they have rightly put over here कि वो सारे subjects के साथ साथ जहाँ पे भी relevant है they will put. Now this is so far as the subjects are concerned. So far as the paper pattern is concerned, I think similar to intermediate, 30% in each paper would be objectives, and not just that, 25% negative marking hoga versus no negative marking in MCQs currently. I think these two are big bold changes that the institute is going to introduce. And the third bold change is there being restricted open book exams. That is open book, तो we all know जैसे अभी elective होता है. What does it mean by restricted open book? Which means कि आपको bare act दिया जाएगा and you have to use the bare act to actually answer the paper. But one thing to note is I think institute is focusing कि यहाँ पे it is not as easy as currently book खोल के आपने answer छाप दिया, because bare act में it will take you effort to search that section. You should know which section to search. You should know the interpretation of that section, only then you can use it. I think restricted open book is a big step so far as final is concerned. और the restricted open book में थोड़ा देखना पड़ेगा कैसे से DT IDT में फिर भी एक्ट्स दे सकते हैं. FR में, ऑडिट में, SFM में एग्जैक्टली क्या करेंगे, क्या मटेरियल देंगे, क्या मटेरियल अलाउ करेंगे में ले जाना, वो थोड़ा कंसर्न रहता है. In fact, I think one clarification from institute would also be required कि सारे papers restricted open book रहेंगे कि सिर्फ selected, let's say like you mentioned, सिर्फ DT IDT open book रहेगा या फिर paper 6 open book रहेगा. That is now paper 6 again paper 6 remains the same, elective. One big change over here is कि paper 6 जो कि elective you could have chosen from the options earlier, अब ये multidisciplinary हो जाएगा. Correct. I तो think this is a very welcome step by institute providing bare acts in all the subjects, because this is what I felt in all the classes. तो कोई भी faculty हो, कोई भी institute के faculty हो, कोई भी book हो, सब book में every book में bare act के सारे content नहीं होते हैं. And I think bare act is bible for chartered accountants. मतलब कुछ भी हो, bare act पढ़ने में अलग ही मजा भी आता है man. मतलब bare act को पढ़ोगे तुम law को, मतलब कितनी भी फैकल्टी की क्लासेस देख लो, कितना भी बुक में छान लो, लेकिन तुम एक बार लॉ का वो सेक्शन खोल के देख लोगे ना, all of your concepts will get clarified. So this, I think this would force the faculties or the books of the institute to be framed in a manner जिसमें bare act incorporate हो रहे हैं, because exam में तो वही रहेगा. So that would become the reference point.
So I think this is a very welcome step if bare acts are provided in all the subjects, and I think that is the real world scenario as well. You can have the sections of the act on a click of a mouse, right? The CA is required to interpret it and have an holistic view of all the acts, and then give an advice or knowledge or whatever. So I think it is very practical, and But still, I the feel very good about it. major issue will be the time management as well, because I don't think institute will increase the time from 3 to 4 hours in all the subjects. So 3 घंटे में पूरा ओपन बुक छान के एक क्वेश्चन करना इज क्रिटिकल. आपको पता होना चाहिए कौन से सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, और एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि Yeah. कौन से सेक्शन में ढूंढना है. दैट इज वेयर योर प्रिपरेशन कम्स इनटू पिक्चर. नहीं तो आई थिंक तो सी तो द पॉइंट इज वही ना कि मतलब यू वोंट हैव टू बाय हार्ट द लैंग्वेज ऑफ द लॉ. Yeah. तो कई बार ऐसा होता है कि थोड़ी सी लैंग्वेज ढंग से नहीं लिखते तो मार्क्स कट जाते थे, कुछ हो जाता था. तो यू विल हैव टू हैव अ होलिस्टिक व्यू ऑफ ऑल द लॉस. तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा मतलब सेक्शन नंबर तो तुम्हें अभी भी याद करना पड़ेगा. सेक्शन नंबर याद करना पड़ेगा, तुम्हें लिंकेजेस याद होना, सब कुछ याद होना चाहिए, लेकिन जो वर्ड एग्जैक्टली याद करना पड़ता था लॉ की लैंग्वेज, वो सब नहीं करनी एक्चुअली पड़ेगी. लिमिट्स लॉ याद की करनी लैंग्वेज, पड़ेगी. लॉ में और भी बहुत सारी चीजें रहती है, 30 डेज 60 डेज एवरीथिंग व्हिच आर समटाइम्स Penalty काउंट होगा, फर्स्ट डे ऑफ मंथ, लास्ट डे ऑफ मंथ, तो वो फ्रॉम सब दैट डे. बट आई थिंक दैट्स अ रिलेवेंट पॉइंट कि मतलब 3 घंटे में सब याद होता है तब भी पेपर कंप्लीट करना मुश्किल होता है. तो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बुक के सारे पेज पलट रहे हो उधर जाके, तो दैट इज नॉट पॉसिबल. So anyways you'll have to have some level of understanding and learning, but not मतलब it would help obviously having a bare act. मतलब ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई हम वहां जाके पूरा खोज लेंगे. आपको सब कुछ उतना ही प्रिपेयर कर जाना पड़ेगा जितना भी प्रिपेयर कर रहे हो. इतना सा है कि कुछ चीजें आप भूल जाओ तो रेफर कर सकते हो, क्योंकि पेनल्टीज आपने रेफर कर ली, डेज वगैरह रेफर कर लिए, कोई रेट रेफर कर ली, तो वो सब रेफर कर सकते हो. बाकी आपको पढ़ाई उतनी की उतनी ही करनी पड़ेगी, उसमें कोई कमी नहीं होने वाली. So I think some of the students or members were suggesting कि open book हो गया है तो शायद अब एग्जामिनेशन का लेवल और टफ कर देंगे, राइट? या फिर ये सब हो जाएगा. तो आई डोंट थिंक दैट ऑल इज रिक्वायर्ड एट ऑल, क्योंकि अभी भी तुम्हें लर्न करना ही पड़ेगा. मतलब यू वोंट हैव द सफिशिएंट टाइम टू गो थ्रू एवरीथिंग. सो आई डोंट थिंक द लेवल ऑफ पेपर्स आर गोइंग टू चेंज मच. दैट वुड रिमेन बाय एंड लार्ज द सेम, बट ओनली हैविंग एन असिस्टेंस ऑफ बेयर एक्ट वुड बी गुड. Agreed. I think made its intention clear कि ना हमें फाउंडेशन थोड़ा मुश्किल करना है या फाइनल कंपैरेटिवली थोड़ा इजी करना है पेपर कम करके ओपन बुक करके. कि जैसे बहुत समय से डिमांड चली रही थी कि एंट्री डिफिकल्ट करो, एग्जिट इजी करो, तो थोड़ा ये स्टेप उसकी तरफ दिखता है. I think apart from what we already discussed, one major changes so far as electives is concerned versus the option 6 papers we had, now it will be multidisciplinary paper 6, and I think Shubham has already taken multidisciplinary in his final attempt, so I think he's the best person to talk about this. Sure. So basically, Divesh can like add the link of the video where I discussed who are the people who should opt for multidisciplinary. It's a very good step. I feel कि सबके लिए multidisciplinary mandatory कर दिया. I'll give you 2 reasons. As a chartered accountants, we are expected कि हमें हर चीज की knowledge हो. मेरे पास जब क्लाइंट आएगा तो ये नहीं बोल के आएगा कि यार मेरे को बस DT की क्वेरी पूछनी है या मेरे को सिर्फ ऐसा का पूछना है. If he is giving me a statement, I have to analyze that from all the perspectives. And I think that is something which I really liked while I was studying the multidisciplinary paper. कि whenever I was reading a case study ना, मेरे दिमाग में सारी चीजें क्लिक हो रही थी कि उसमें DT में क्या प्रोविजन है, IDT में क्या प्रोविजन है. It will help the students. And second thing is, इतने सारे इलेक्टिव्स होने से क्या हो रहा था, दैट डिफिकल्टी लेवल इंस्टीट्यूट मेंटेन नहीं कर पा रहा था हर पेपर का. किसी पेपर में कुछ डिफिकल्ट आ जाता था, किसी में कुछ डिफिकल्ट आ जाता था, एंड कहीं ना कहीं वो अनजस्टिस हो रहा था स्टूडेंट्स का. तो आई थिंक हैविंग अ कॉमन इलेक्टिव विल हेल्प दैट, बिकॉज इंस्टीट्यूट परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट तो ला नहीं रहा था. आई सजेस्टेड दैट टू देम, बट एटलीस्ट इफ देयर इज अ सिंगल इलेक्टिव देन एटलीस्ट हम लोग रैंक होल्डर्स के लिए तो यार थोड़ा पैरिटी रहेगा, एंड अदरवाइज भी स्टूडेंट्स के लिए. नाउ लाइक कमिंग थ्रू इसमें चैलेंजेस क्या हो सकते हैं. सी मल्टीडिसिप्लिनरी में आपसे सारे सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे, सो बोथ ग्रुप्स वालों के लिए फिर भी मैनेजेबल है. बट आई कैन नॉट थिंक ऑफ अ पर्सन जो सिर्फ सेकंड ग्रुप दे रहा है. लेट्स से इफ अ पर्सन इज स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रुप 2, तो हाउ कैन दैट पर्सन अटेम्प्ट द मल्टीडिसिप्लिनरी पेपर्स में अगर एफआर का क्वेश्चन होगा, उसमें अगर ऑडिट का क्वेश्चन होगा. सो आई थिंक दिस इज समथिंग यहाँ पे इंस्टीट्यूट को थोड़ा देखना पड़ेगा. एंड आई थिंक स्टूडेंट्स को भी फिर सेकंड ग्रुप जनरली नहीं देंगे वो पहले. दे हैव टू स्टार्ट विद द ग्रुप 1, clear it, and then move to group 2. I don't think so कि इस एरिया में इंस्टीट्यूट को कुछ देखना पड़ेगा. मतलब I think it's natural ना, first group दो then second group दो. Why do you want to go for group 2 once, right? सही है, मतलब there's no दिक्कत. I don't think institute needs to change it. मतलब ग्रुप 1 देना पड़ेगा. Now it would become a practicality कि पहले ग्रुप 1 देना ही पड़ेगा फिर ग्रुप. हाँ, yeah. और इसमें एक चैलेंज आएगा. करेक्ट, दिस इज ओपन बुक पेपर, एंड ऑनेस्टली टेलिंग यू मल्टीडिसिप्लिनरी में जो बिगेस्ट कंसर्न था मेरा पूरी प्रिपरेशन में पढ़ाई पे, दैट वाज नॉट पेपर कैसा आएगा, दैट वाज नॉट पढ़ाई कैसी होगी. तो कंसर्न वाज मैं इतनी बुक्स एग्जाम सेंटर पे लेके कैसे जाऊंगा.
there were 33 books which I had to carry to the examination center, जो कि 3rd floor पे था. तो अब इसमें तो इंस्टीट्यूट को यार कुछ करना पड़ेगा कि Did वो you बुक्स take इतनी porters कैसे with जाएंगी. you? How did you यार carry खुद ही 33 लेके books? गया था 2 बैग. जाते हुए लिफ्ट का एक्सेस ही नहीं मिला, वापसी में लिफ्ट से आया. मैंने कहा बाद में जाओ. But I think this is also like something which institute को या students को कुछ तो manage कर लेना, because बहुत ज्यादा material हो जाता है. कुछ बुक्स प्रिस्क्राइब करनी पड़ेगी अभी इंस्टीट्यूट को क्या क्या लेके आ सकते हो. Actually नहीं यार, मैं स्टडी मैट्स लेके गया था सर. नहीं कुछ तो रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, इतने बुक्स तब नहीं लेके हाँ, आ. Shubham was like कि सब लोग CA बनने के बाद वो पोस्ट डालते हैं stack of books and I became a CA. Actually, He's like last exam में डाल दो, हो गया मेरा. लास्ट एग्जाम में डाल दो. तभी इंस्टीट्यूट ने शायद लास्ट एग्जाम रखा है कि तुम्हें वापस नहीं जानी, वहीं छोड़ के आ जाओ. You will value लास्ट the कर दिया, thing. दैट इज गुड. आप 500 पढ़ के आओगे जस्ट अभी बहुत ग्रुप दे रहे हो तो. हाँ, अभी correct. इशू था कि आपका DTRT बचा हुआ होता था उस पॉइंट. तो लीव में पढ़ना पड़ता था. That's actually a good step. करेक्ट. पर एक्चुअली that's इसमें एक actually और डिफरेंस है कि अभी इसमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को भी इंटीग्रेट किया है इन्होंने, और सब्जेक्ट का नाम इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस है. मतलब थोड़ा डिफरेंट होएगा जो अभी होता है. नॉट एग्जैक्टली द सेम. करेक्ट. Like I was थोड़ा- saying, it would be really good if introduced, मतलब makes it, brings in some of the management POV. Actually that is what is Yeah. going to happen, because I heard that कुछ members ने डाला है ये काउंसिल मेंबर्स के कान में बात कि हम लोग जब MBA कर रहे हैं, so we used to say that we are also open book case studies and all, and when MBA लोग देख रहे कि ये टाइप की केस स्टडीज तो यार ये तो कोई केस स्टडी भी नहीं हुई, तो उस टाइम पे ये लोग को लगा कि हाँ भाई ये तो कोई स्टडी अलग लेवल की जो MBA में पढ़ रहे हैं और यहाँ पे बहुत अलग हो गया, एंड काउंसिल विल ब्रिंग सम दोस टाइप ऑफ केस स्टडीज इन दिस सब्जेक्ट आई बिलीव. I think, but still, I hold my point that इधर कुछ ही part of that type of case studies ला पाएंगे, तो still I would want a complete 100 mark selective of that sort of management thing, right? पेपर मत बढ़ाओ, बच्चे खुश नहीं होंगे. No, सेल्फ पेज में डालो. हाँ That's हाँ self-paced में. वहाँ That's डालो. what I mean, ऐसे not पेपर मत elective. बढ़ाओ. Self-paced. ऑलरेडी कंटेंट बहुत है. Yeah. जैसे कि हम देख सकते हैं कंटेंट एक्सेस कुछ भी बहुत कम नहीं हुआ है. Exactly. So not at all as the कम level नहीं of है. CA ड्यूरेशन कम है ना reduced कंटेंट कम है. और content कम हुआ है. Right. I think it has increased in a way. आप 4 सेल्फ पेस्ड है वो से बढ़ ही गए एक तरीके से, तो कम कुछ भी नहीं हुआ है. Correct. Right. Articleship be in effect, duration of the CA course has also not reduced. It has by and large the same. But I think everything is in a positive step. So The intention is that. except other amendments Except for that one last piece that we'll now discuss. And I think Bhramar bhai, please bring that up. I think this is one very important thing that I think we all should discuss, and one major change that the institute has brought. I think the intention behind this change is कि जो articleship period एक साल कम किया उसके सामने all those CAs who want to do practice उनके लिए 1 year of post qualification experience under FCA they've made mandatory. But I think I have two counters to the institute over here. कि एक तो articleship actually CA course का tenure कम नहीं होगा because of this 1 year CA course का tenure बढ़ जाएगा. That is one. And second is articleship period actually let's say net effect सिर्फ 6 महीने से कम हो रहा है because any which ways 6 महीने तो पहले भी like 156 days तो पहले भी लीव थी. So it's just getting reduced by 6 months. उसके सामने एक 1 year post qualification experience आ जा रहा है. This is one. And second is आप ये तो गारंटी नहीं कर सकते कि 1 year जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, किसी ने 1 year टैक्स में काम किया लेकिन वो प्रैक्टिस ऑडिट की करेगा, तो आई डोंट थिंक इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि 1 year किया इसीलिए ही इज eligible to actually practice. So I don't think that makes a lot of sense. And second is for the existing members, the institute is saying कि existing members, that is all of us who've pursued 3 years of articleship, हमारे लिए भी we will have to follow this criterion and will be exempt only if we've worked under CA in the last 5 years. तो हमने तो 3 year की articleship करी, उसके बाद भी ये 1 year का post qualification experience आ रहा है. So I think this is something that at least to me I feel might require a rethinking, and ये 1 year वाला at least निकालना चाहिए according to me. Yeah, I think that it does not makes a lot of sense. मतलब पहले भी यार 3 साल की आर्टिकलशिप होती थी लेकिन अल्टीमेटली वही 6 महीने लीज पे जाते थे एंड 2-3 महीने देन आफ्टर एग्जाम जाते थे जो वैसे भी सीरियस होते नहीं थे. तो इन इफेक्टिव आर्टिकलशिप पीरियड 2 ही साल रहता था यार. उसके बाद भी सीओपी दे देते थे, अब भी 2 साल के बाद दे दो सीओपी. एंड आई थिंक अनदर इंप्रेशन हियर वुड बी, मतलब दिस इज अ वेरी ट्रिकी बिजनेस फॉर इंडस्ट्री. मतलब सी नाउ द सिचुएशन वुड बी बंदा इज क्वालिफाइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी, नाउ उसको प्रैक्टिस करनी है तो ही विल गो टू प्रैक्टिस इन अ फर्म for 1 year and he knows that he'll practice in this firm for 1 year, and the CA firm would also know that this guy has come for practicing with me for 1 year. मतलब how interested would he be for his development, right? उसको तो पता है employee जाने वाले हैं. But on the contrary,
he will be cautious कि भाई ये बंदा मेरे clients को poach करके ले जाएगा. Agree. मतलब this would trigger in a lot of dynamics. I don't know मतलब if this is going to hold or stick. मतलब it could backfire a lot. This whole provision of 1 year COP. Code of ethics में एक और schedule add हो जाएगा. I agree to what Bhramar bhai says. I think one important point also is because all the FCAs would know कि किसी को भी COP लेना है, उसको 1 year का post qualification experience necessary है. I think यहाँ पे pay will also take a huge hit, and I think that will be a major concern. And obviously learning compromise होगी because 1 year के बावजूद you cannot anyways guarantee learning. क्योंकि अब किसी का genuine intention भी होगा long term job करने का, फिर भी the employer, that is the FCA, will probably think कि हो सकता है ये 1 साल के बाद छोड़ के he will start his own practice. So I think for the first year कोई भी employer इस employee में, that is the fresher CA, उसमें invest नहीं करेगा. Completely agree on the PA वाला point, Divesh. So मतलब it is like creating a mandatory flow of supply. Well, demand Exactly. same रहेगा. Supply बढ़ेगा ही बढ़ेगा. मतलब natural forces of demand and supply are coming in and prices would go down. मिनिमम स्टाइपेंड रखो यार अच्छी खासी फिर तो 1.5 लाख बता के सीए बन गए ये बन गए एक्चुअली ना मिनिमम रखो ना अदरवाइज फिर एक्सप्लॉइटेशन होगा कि अगर किसी सीए को पता है कि मेरे पास 1 साल का एक्सपीरियंस के लिए आया करेक्ट ना तो रख दो 1 लाख रुपए देने ही देने हैं व्हाट आई बिलीव इज दिस विल लीड टू फोर्जरी एक्चुअली बहुत सारा फर्जीवाड़ा होगा हो सकता है कि कुछ सीए क्वालिफाई होने के बाद साथ साथ कई लोग करते ही है साथ में प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं एंड ऑल्सो डूइंग साइड वर्क कुछ ना कुछ करते हैं तो थोड़ा बहुत अपना काम करते रहे एंड एक फर्म के साथ रजिस्टर हो जाए जैसा होता है एंड फर्म के साथ रजिस्टर होकर साइड बाय साइड 1 साल के बाद सीओपी ले लेंगे I think फर्क ये पड़ेगा कि साइन नहीं कर पाएगा सीए फॉर 1 year after becoming हाँ but he won't actually be getting work in the first year itself so side by side register करवा लो exactly so in effect it doesn't make a lot of sense to bring this provision because people will always find a way to bypass this तो ये इंटेंशन इसका कभी सॉल्व नहीं होगा. One more thing is कि ना अगर कोई इंडस्ट्री से मान लो स्पेशलाइज्ड एक्सपीरियंस लेके आ रहा है और वो उस चीज पे प्रैक्टिस चालू करना चाहता है तो व्हाई शुड ही वर्क अंडर प्रैक्टिसिंग सीए जो कि कन्वेंशनल काम देखता है या कुछ भी काम देखता है वो कुछ नया काम लेके आ रहा है इंडस्ट्री से और वो डायरेक्टली एक कंपनी एक्सपीरियंस उसके पास है वो डायरेक्टली उससे प्रैक्टिस चालू करना चाहता है तो वो क्यों एक दूसरे सीए के पास काम करे 1 साल अपने एक्सपीरियंस को डाइल्यूट करे इनफैक्ट वेरी वैलिड पॉइंट अक्षत मतलब what is this logic कि अगर तुम CA फर्म के अंडर ही काम करोगे तो you would have the relevant experience and that too fellow chartered accountant यार पीयर रिव्यू वाला डाल देंगे ना फिर इंडस्ट्री में तो डबल कर दो मतलब कर लो अगर तुम्हें 1 साल इंडस्ट्री में 2 साल कर लो काम and मतलब does not really make a lot of sense कि CA के अंडर ही काम करना पड़ेगा तुम्हें मतलब एनी केस ना प्रैक्टिस का स्कोप बहुत कन्वेंशन बहुत वाइड होता है हम कुछ भी कर सकते हैं प्रैक्टिस में राइट तो डीप पैट मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विस तो आप इंडस्ट्री सीख के भी आ सकते हो जरूरी थोड़ी आप CA फर्म में सीखो कंसल्टिंग सर्विस तो इंडस्ट्री में भी सीख सकते हो या बिल्कुल सही बात और I think क्या go ahead Divesh people I think will be this in a way disincentivizes people to go for practice in a way that's what my opinion says. True. So the rationale of institute will also call for the rationale of institute they are like कि उनकी thinking ये है कि 3 साल था तो 2 साल अब करो तो 1 साल इधर करो एंड जिसको जॉब करने जाना है वो 2 साल में ही चले जाओ बट स्टिल एज वी एक्सप्लेन्ड दैट पहले भी 2 साल था ही ऑलमोस्ट इफेक्टिवली एंड अभी भी 2 साल ही इफेक्टिवली सो ऑल इन ऑल आई थिंक आई विल कंक्लूड दैट दिस मूव इज व्हाट वी थिंक इज वेरी अनकॉल्ड फॉर एंड आई थिंक योर कमेंट्स शुड definitely flow in this is like sacrificing 1 years of yours so I think even encourage your students even encourage non-students non-CA things because I think the survey is open for open for all academicians professors members like open to anyone. all matlab let your comments flow in flood in that we don't want this and this does not make sense to us Bhramar भाई रेफरल बोनस दे रहे 10-10 रुपए एक जितने करोगे सबमिट 10 रुपए ईच जीपे आईडी अपनी कमेंट सेक्शन में लिख देना. Well, I think we have been talking about the survey and this feedback a lot of time throughout the video, but I think once I'll like Divesh to just come across and tell you all about what this survey is and how you can access it and क्या करना क्या है अपन को. Yeah. So Brown, if you could present the survey. So guys, I think as you all can see, this is the survey of the institute. The link for this is boscret.ici.org. We'll put the link in the description of this video as well. इसमें basically institute ने, I think this is something that we should appreciate the institute for. काफी categorically हर एक जो change है उसके बारे में questions रखे in detail. हर एक लाइक इंटर का अलग फाउंडेशन का अलग सीओपी के अलग आर्टिकलशिप का अलग एक्सेट्रा एक्सेट्रा इन डिटेल सारे क्वेश्चंस है यस नो एक्सेट्रा यू कैन इवन गिव योर कमेंट्स इफ यू डोंट डिसएग्री विद इंस्टीट्यूट ऑन अ पर्टिकुलर स्टैंस
and this is open for all, for students, members, for parents, for academicians, etc., etc. And इसमें जैसे no more लिखा हुआ है, उसमें you can click the no more to know more actually about what the change is. I will strongly encourage you. It won't take more than 5 minutes of yours. Do express your interest before 1st of July, because the draft regulations are open for comments only till 1st of July. In fact, only till 30th of June. And please express your interest. ये पूरा survey है. इस लिंक पे जाके do इनफैक्ट ये वीडियो देखने के बाद तुरंत ही do click on the survey link and do fill this survey. Another point that I mentioned is it is not just open to students or chartered accountants. It is open to member in practice, member industry, academician, student, and others as well. So anybody can fill in this survey. So encourage others as well to fill this survey. This is what is going to shape your future and what you are going to do in future. And the whole object of us coming with this video is that we kind of start the conversation, and for you to start conversation with your friends about what is happening, what are the amendments, and where you can pitch in, and where your pitching in is required. So we'll definitely strongly urge you to go through this survey right now, right after this video. And do fill this survey, like Bhramar mentioned. Do mention your views on how you found this video. If you felt this video was informative, do please share it with your friends, as many people as you can share this with. Do mention your views in the comment. Obviously, needless to say, like or subscribe to karna hi aapko. Thanks a lot to the entire panel over here. Yeah, and before concluding, I would say that I think every person sitting on this interview right now and every person in the audience right now, if they are related to CA, would have bitched about the institute, would have bitched about CA course. It is not possible that you have not bitched about it. So now is the chance to convert that bitching into something really good and make it practical, right? So bitching karne se nahi hota hai. When institute is providing you a way forward, please pitch in, and don't think कि ये time pass का comments है, कोई required by law है तो institute निकाल दिए बस 30 दिन की notice and ये सब dustbin में जाएंगे. No, if you see the webinar of BOS for members as well as students, so they are encouraging and they will obviously take inputs. बीच में हमने वीडियोस में बताया भी था कि ये टॉपिक्स जो है वो रिकमेंडेटरी है, and they even said in the video कि वो जो articleship वाला चीज है, that is also just a thought. So your comments would really shape how this course turns out to be. So don't think ये सब time pass है. Please give your conscious mind and conscious effort and good time and put your comments in. And positive comment, not just negative comments. Both positive and negative. इस चीज का proof करते हो तो वही बताना कि हाँ ये चीज correct. Institute will also feel that they are moving in the right direction. Because बाकी लोग ने negative comments दे दिया, you would want ना कि ये चीज अच्छी है, रखो. Correct. And I think one last point, so far as the positive comments are concerned, I think एक positive comment, like positive change definitely है कि stipend has been increased by 100%. And आपको अगर still कम लग रही है तो that is also something that you can mention in institute. That is still कम, Divesh. Still कम लग रही है क्या? No, I know, but I'm supposed to be diplomatic because I don't want to influence लोगों का opinion. No, influence people, man. As a matter of we fact, don't deserve you such should... less money. Agreed. As a matter of fact, you should express your opinion कि stipend still come है on this survey, but do fill your opinion in this survey without fail. Thanks a lot, guys, for watching this video, and I hope this in a way will start conversation with your friends and your families and your fellow chartered accountants. Thanks a lot, everyone. Bye. Bye.